नमो नमः। शतश्लोकेन पण्डितः संक्षेपरामायणस्य व्याकरणांशानाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। प्रार्थनां कुरु। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि। नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः। मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। Okay. We will start from 50th shloka, the revision of 50 shloka. We will take the recitation at the end. So we'll cover the shlokas first. वार्यमाण सुबहुषो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह तस्याश्रमपदं तदा। तर्हि अत्र पदविच्छेदः अस्ति। वार्यमाणः सुबहुषः मारीचेन सह रावणः न विरोधः बलवता क्षमः रावणः तेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्य आश्रमपदं तदा इति तत्र पदविच्छेदः। तर्हि अधुना अन्वयं पश्यामः। तर्हि अत्र जगाम इति क्रियापदं। कः जगाम? रावणः जगाम। कुत्र जगाम? आश्रमपदं जगाम। किं कृत्वा जगाम? अनादृत्य। किम् अनादृत्य? रावणः कीदृशः, आश्रमपदं कीदृशः इति सर्वम् अधुना पश्यामः। तर्हि अत्र किमस्ति? आश्रमपदं। कस्य आश्रमपदं रावणः जगाम? तर्हि तस्य नाम कस्य? रामस्य आश्रमपदं रावणः जगाम। तदा नाम पूर्वस्मिन् श्लोके सन्दर्भः अस्ति इति कृत्वा तदा। किं कृत्वा? अनादृत्य। किम् अनादृत्य? तद्वाक्यम् अनादृत्य। कस्य वाक्यं? किं वाक्यं? तर्हि इति एवं वाक्यं। किं वाक्यम् इति अत्र लिखितं वर्तते। किं लिखितमस्ति? हे रावण ते विरोधः। एकक्षणं। हे रावणः न क्षमः, भवान् न क्षमः, ते सह विरोधः न क्षमः means you are not capable of doing the virodha, O Ravana, is the sentence uttered, and having listened to that sentence, after listening to that sentence, उसने यह वाक्य सुनने के बाद उसका अनादर करके तद वाक्यम अनादृत्य, उस वाक्य का अनादर करते हुए रावणः आश्रमपदं जगाम। अधुना कीदृशः रावणः? कालचोदितः, सह मारीचः, तथा च वार्यमाणः। केन वार्यमाणः? मारीचेन सुबहुशः वार्यमाणः रावणः। तर्हि रावणः केन सह गच्छति? मारीचेन सह गच्छति। मारीचेन तस्मै तं वार्यमाणः कतिवारं? सुबहुशः वार्यमाणः। तथापि रावणः तम् अनादृत्य आश्रमपदं जगाम इति वाक्यं। तर्हि अत्र पश्यतु, रावणः बलवता तेन
ते विरोधः न क्षमः, बलवान ऐसे राम के साथ तुम्हारा विरोध तुम सक्षम ही नहीं हो, योग्य नहीं हो। ऐसा वाक्य जब मारीच ने कहा, मारीचेन सुबहुशः वार्यमाणः, ऐसा कहते हुए मारीच ने अनेक बार उसका निवारण किया, उसको रोका, फिर भी सह रावण कालचोदित, मानो उसको काल ने ही बुलाया था, काल ने ही प्रेरणा दी थी, ऐसा तदवाक्यम अनादृत्य, उस वाक्य का अनादर करके, सह मारीच, मारीच के साथ ही उसके आश्रम पद में गया। कौन गया? रावण गया। ये सब हमने अन्वय अभी देखा है, तो मैं हर एक पद का व्याकरण अभी नहीं लूंगी, सिर्फ वी विल सी द समास। अस्तु, सुबहुशः अत्र समासः वर्तते। सुबहुशः, सुष्ठु बहुशः मीन्स् भृशार्थं वर्तते सु इति पदम्, तर्हि अतिशयम् इति अर्थेन सुबहुशः कर्मधारय समासः वर्तते तत्र। तथा च अग्रे समासः अस्ति, you can always see what you have written in the समस्तपदा. See, सुष्ठु बहुशः कर्मधारय समास, you can see the Google sheet, right? Can anyone please answer? Yes, okay. Thank you. Thank you very much. So you can refer to the sheet verse by verse. Okay. Now we will proceed to the next shlok. I mean next samasthapada, that is anadrutya. न आदृत्य इति अनादृत्य. तर्हि तत्र तत्पुरुष न तत्पुरुष समासः वर्तते. कालचोदितः, कालेन चोदितः, तृतीया तत्पुरुष समासः. सह मारीचः इत्यत्र मारीचेन सह इति समासः, अत्र तृतीया तत्पुरुष समासः एव वर्तते. अत्र पश्यतु, सः बहुव्रीहि समासः अस्ति, क्षम्यताम्, सः बहुव्रीहि समासः, सः इति पदमस्ति इति कृत्वा सः बहुव्रीहि समासः तत्र वर्तते. सो यू कैन क्रॉस चेक, सः मारीचः, मारीचेन सह बहुव्रीहि समासः. अस्तु, तर्हि अग्रे पश्यामः. तत्र अत्र सूत्रस्य उल्लेखः अस्ति. सामान्यतः सः इत्यस्य स इति भवति, परन्तु अत्र न भवति, सः इति पदं तथैव तिष्ठति इति अत्र लिखितम्. सः मारीचः आश्रमपदम्, अत्र आश्रमः च तत्पदम् इति तु दत्तमस्ति. राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम् इत्यस्य पुस्तके अपि एतदेव विग्रहं दत्तमस्ति, परन्तु आश्रमस्य पदम् इति समासविग्रहः भवेत् इति मे मतिः, परन्तु I have asked the experts about that, and as soon as they answer I will let you know in the group. Astu. Tarhi we have seen the whole verse. Now let's look at the meaning. हे रावण, राम शक्ति संपन्न है, उनके साथ तुम्हें विरोध नहीं करना चाहिए. इस प्रकार मारीच के द्वारा बार बार मना किए जाने पर भी मृत्यु के द्वारा प्रेरित रावण मारीच की बात का अनादर करके मारीच के साथ भगवान राम की कुटिया मतलब पंचवटी में गया. रावण में इसलिए गया. तर्हि अधुना we will go to the next shloka, that is तेन माया विना दूरम अपवाह्य नृपात्मज जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्. अत्र अन्वयः कथं भवति इति पश्यामः. जहार, जहार इत्यत्र लिट् लकारस्य रूपमस्ति. ऋ धातोः हरणं कृतम् इति अर्थः. जहार, केन जहार?
रावणः कः जहार? रावणः जहार। तर्हि कं जहार? कर्मपदमस्ति भार्यां। रावणः भार्यां जहार। कस्य भार्यां जहार? रामस्य भार्यां जहार। किं कृत्वा जहार? तर्हि हत्वा जहार। कं हत्वा? गृध्रं जटायुषं हत्वा रावणः रामस्य भार्यां जहार। तथा च इतोपि किं कृत्वा? अपवाय्य इति अस्ति। कौ अपवाय्य? नृपात्मजौ अपवाय्य। केन तत्र अपवाहनं कृतम् इति चेत् तेन मायाविना, नाम रावणेन। मायाविना रावणेन नृपात्मजौ अपवाय्य जटायुषं गृध्रं हत्वा रामस्य भार्यां जहार इति अन्वयः भवति। पश्यतु अत्र, तेन मायाविना, उस मायावी रावण ने नृपात्मजौ, उन दोनों नृप आत्मजों को, मतलब लक्ष्मण और राम को, दूरम अपवाह्य, दूर भेजकर, गृध्रम जटायुषम हत्वा, गृध्र ऐसे जटायु नामक गृध्र को, गृध्र का हनन करने के बाद राम की भार्या का अपहरण कर लिया। रामस्य भार्यां जहार इति अस्ति अन्वयः। तर्हि अत्र तेन मायाविना दूरम् अपवाय्य नृपात्मजौ, नृपस्य आत्मजौ, नृपात्मजौ षष्ठी तत्पुरुष समासः। परन्तु आत्मज इत्यत्र अपि समासः अस्ति। आत्मनः जायते इति आत्मजः। अत्र कीदृशः समासः? उपपद तत्पुरुष समासः अस्ति। अस्तु, तर्हि अत्र अस्तु, तर्हि अन्यत् समस्तपदमत्र नास्ति। पश्यतु, अत्र नृपात्मजौ इति एकमेव तत्र समस्तपदं वर्तते। Now we will go to the next shloka. गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा ऋतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्तप्तः विललाप आकुलेन्द्रियः. Before proceeding to this shloka and anvaya, let me see if there is any question. Is Mayavina not Maricha here? Mayavina tena. Tena Mayavina nrupatmajau duram apavayya. Yeah, we can say that Mayavi was Maricha here. Even Ravana was Mayavi. So he has taken the disguise of Rishi, right? A Muni. So he is also a Mayavi. But we can refer this to here Tena is written. So we can रावणः जहार इति यदि उच्यते तर्हि तेन इत्यस्य अत्र अन्वयं मारीचेन इति वक्तुं शक्नुमः। सत्यम्। अस्तु। आत्मजायाः विग्रहवाक्यं किम्? आत्मज इति अस्ति खलु? आत्मजः, आत्मजौ इति द्विवचनम् अस्ति तत्र। आत्मनः जायते इति आत्मजः, अत्र द्विवचनं देवः देवौ इव आत्मजौ इति वर्तते। अस्तु, आत्मजाया इति कुत्र दृष्टम् अहं न जानामि। आत्मजाया इति अत्र नास्ति। अस्तु, तर्हि we will see the गृध्रं निहतं दृष्ट्वा अन्वयं पश्यामः। विललाप इति क्रियापदमत्र। I will take the questions at the end. Please don't raise the hand now. So विललाप इति कः विललाप? राघवः विललाप।
कीदृशः राघवः? आकुलेन्द्रियः राघवः, शोकसन्तप्तः राघवः, विललाप। तो हि लैमेंटेड इति अर्थः अस्ति। कीदृशः राघवः? आकुलेन्द्रियः शोकसन्तप्तः इति। तथा च किं कृत्वा श्रुत्वा, किं श्रुत्वा? मैथिलीमृताम् इति श्रुत्वा शोकसन्तप्तः आकुलेन्द्रियः राघवः विललाप। तथा च निहतं गृध्रं दृष्ट्वा, सो गृध्र को जटायु को निहत मतलब उनका हनन हुआ देखकर, और मैथिली को मतलब मिथिला देश की जो पुत्री है, ऐसी राजपुत्री को हरण किए हुए सुनकर राम शोक संतप्त हुए और व्याकुल हुए। ऐसे राम ने विलाप किया, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। शोक संतप्तः इत्यत्र समासः वर्तते। शोकेन संतप्तः शोकसन्तप्तः, तृतीया तत्पुरुष समासः अस्ति। शोकेन संतप्तः शोकसन्तप्तः। आकुलेन्द्रियः, आकुलानि इन्द्रियाणि यस्य इति बहुव्रीहि समासः अत्र वर्तते। आकुलेन्द्रियः कः अस्ति? रामः, तस्य विशेषणमस्ति, बहुव्रीहि समासः भवति। अस्तु, तर्हि संपूर्णस्य श्लोकस्य अर्थः अस्ति गृध्र जटायु को घायल देखकर तथा उसके मुख से सीता के अपहरण के समाचार को जानकर श्री राम शोक संतप्त एवं व्यथित होकर रोने लगे। अस्तु, जटायु को घायल देखा और उसके मुख से मतलब उसके बारे में, सीता के बारे में सुनने के बाद वो व्यथित होकर रोने लगे, विलाप करने लगे, ऐसा यहाँ पर कहना चाहिए। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणः वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् इति श्लोकः अस्ति। तर्हि तस्य अन्वयं कुर्मः। सन्ददर्श इति क्रियापदम्। केन सन्ददर्श? कः सन्ददर्श इति चेत् राघवः सन्ददर्श, कर्तृपदं प्रथमा विभक्तौ, यतोहि कर्तरि क्रियापदं वर्तते। राघवः सन्ददर्श। कं सन्ददर्श? राक्षसं सन्ददर्श। कदा? कीदृशः राघवः इत्यस्य कृते विशेषणानि सन्ति। तर्हि प्रथमं राघवः इत्यस्य विशेषणं किम् इति पश्यामः। राघवः, कीदृशः राघवः? मार्गमाणः राघवः। कां मार्गमाणः राघवः? सीतां मार्गमाणः राघवः, मतलब सीता को ढूंढने निकले हुए ऐसे राघव ने राक्षस को देखा। और कैसा राघव? कीदृशः राघवः इतोपि? युक्तः। केन युक्तः? शोकेन। तेन एव शोकेन युक्तः राघव। पिछले श्लोक में हमने देखा है वह शोकाकुल हुए थे, तो उसी शोक से युक्त ऐसे सीता को ढूंढने वाले राघव ने राक्षस को देखा। कदा? किम कृत्वा? दग्ध्वा। कम दग्ध्वा? गृध्रम दग्ध्वा। कम गृध्रम? कम नामकं गृध्रम? जटायुषं नामकं गृध्रम दग्ध्वा। कुत्र दग्ध्वा? वने दग्ध्वा। राक्षसं सन्ददर्श। कीदृशं राक्षसं? कबंधम नाम राक्षसम। उस राक्षस का नाम कबंध है, और वो कैसा है? घोर दर्शनम कबंधम। तथा च विकृतम कबंधम। केन विकृतम? रूपेण विकृतम कबंधम नाम घोरदर्शनम राक्षसम सन्ददर्श। कः सन्ददर्श? राघवः सन्ददर्श। तर्हि अन्वयः पश्यतु अत्र। ततः तेन एव शोकेन गृध्रं जटायुषं दग्ध्वा वने सीतां मार्गमाणः
रूपेण विकृतं घोरदर्शनं कबन्धं नाम राक्षसं सन्ददर्शः इति अस्ति। कः राघवः इत्यस्य अध्याहारः अत्र करणीयः। संपूर्ण श्लोक का अर्थ देखिए। उसके बाद उसी शोक मतलब सीता का अपहरण हुआ है, इस शोक से युक्त श्री राम ने जटायु का दहन करने के बाद सीता को खोजते हुए भयंकर एवं विकृत दर्शन वाले, विकृत दिखाई देने वाले कबंध नामक राक्षस को देखा। यह अर्थ हुआ। अभी इस श्लोक में समस्त पद क्या है हम देखते हैं। ततः तेनैव शोकेन गृध्रम धक्ता, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, समस्त पद है ही नहीं। सो दिस इज द 54-55 श्लोक वी कैन सी हियर। शोक संतप्तः आकुलेन्द्रिय घोरदर्शनः दर्शनम् इति अस्ति, तर्हि तत्र घोरं दर्शनं यस्य सः इति घोरदर्शनम् इति भवति। तम् इति तत्र द्वितीया वर्तते। अत्र किमर्थं न दत्तम्? अस्ति खलु, क्षम्यताम्। घोरदर्शनं, घोरः दर्शनः, क्षम्यताम्, घोरं दर्शनं यस्य सः, जिसका दर्शन घोर है मतलब भयंकर है, ऐसा वह। तम इति द्वितीयायाम् अस्ति इति कृत्वा तम इति लेखनीयम्। अस्तु। कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्। अस्तु, सन्ददर्शः। Now we will go to the next shloka. Tam nihatya mahabahuः ददाह स्वर्गतः च सः च अस्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणां धर्मनिपुणां अभिगच्छ इति राघव। तो जो कबंध है उसका आगे क्या हो रहा है, वो क्या कह रहा है, इसके बारे में इस श्लोक में कहा गया है। तर्हि अस्य अन्वयं पश्यामः। अत्र तं निहत्य महाबाहुः ददाह इति एकं क्रियापदम्, कथयामास इति द्वितीयं क्रियापदम्, अभिगच्छ इति तृतीयं क्रियापदम्। तर्हि वाक्यत्रयं भवति अत्र। पश्यतु, ददाह, कः ददाह? महाबाहुः नाम राघवः। कं ददाह? कबन्धं ददाह। किं कृत्वा ददाह? निहत्य ददाह। तर्हि अन्वयः भवति महाबाहुः राघवः तं कबन्धं निहत्य ददाह इति वर्तते। तथा च स्वर्गतः सः इति वर्तते, तस्य अन्वयं भवति सः च कबन्धः स्वगतः। स्वर्गतः इति अस्ति, स्वः गतः मीन्स स्वर्ग में चले गए। स्वः इति स्वर्ग इत्यस्य पर्यायवाची शब्दः अस्ति। सः कबन्धः स्वः गतः, स्वः नाम स्वर्गं गतः। स्वः इति तत्र अव्ययं स्वर् इति अव्ययमस्ति, रेफस्य तत्र विसर्गः भवति। स्वर्गतः स्वर्गतः इति वर्तते। तर्हि अग्रे वर्तते कथयामास इति क्रियापदम्। तत्र सः कथयामास, कः सः? पश्यामः। अभिगच्छ, तर्हि कौन बोल रहा है? कबंध कह रहा है। क्या कह रहा है? अभिगच्छ, हे राम अभिगच्छ। कुत्र अभिगच्छ? हे राघव, हे राम अभिगच्छ। कुत्र अभिगच्छ? शबरीम अभिगच्छ। कीदृशीं शबरीं? श्रमणाम् अथवा श्रमणीं, तत्र पाठभेदः वर्तते। धर्मचारिणीं, धर्मनिपुणां शबरीम् अभिगच्छ इति सः अस्य कथयामास। अस्मै इत्यस्य स्थाने अस्य इति षष्ठी
विवक्षा अस्ति इति कृत्वा तत्र षष्ठी आगच्छति। तर्हि अत्र सम्पूर्णस्य श्लोकस्य अन्वयः भवति महाबाहुः राघवः कबन्धं निहत्य तं ददाह। वी कैन आल्सो से तं कबन्धं निहत्य ददाह। सः च कबन्धः स्वः गतः, स्वर्ग में गए। उसके बाद उन्होंने स्वर्ग जाते हुए कहा, हे राघव, धर्म निपुणाम धर्मचारिणीम श्रमणीम वा श्रमणाम शबरीम अभिगच्छ इति सः कबन्धः अस्य कथयामास। उसे कहा, इसे कहा है, राम जी को कहा। अर्थ देखिए, महाबाहु रामचंद्र ने कबंध नामक राक्षस को मारकर उसे अग्नि में जला दिया, मतलब उनका दाह संस्कार किया। वह कबंध नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्ग के योग्य गंधर्व रूप उन्होंने धारण कर लिया। उसके बाद स्वर्ग जाते हुए उसने श्री राम से निवेदन किया कि हे राम, आप धर्मचारिणी शबरी के पास जाए। सः अभ्यगच्छन् महातेजाः शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामः दशरथात्मजः इति अग्रिमं श्लोकं प्रति अधुना तत्र अन्वयं पश्यामः। अभ्यगच्छत्, कः अभ्यगच्छत्? सः, सः नाम कः? रामः। कीदृशः रामः? महातेजाः, महान् तेजः यस्य सः महातेजाः। शत्रुसूदनः, शत्रूणां सूदनः शत्रुसूदनः, सः रामः शबरीम् अभ्यगच्छत् इति वर्तते। तथा च अग्रे किं भवति? पूजितः, का रामं पूजितः? तर्हि क्षम्यतां, कया रामः पूजितः इति चेत् शबर्या रामः पूजितः। रामः कीदृशः अस्ति? दशरथात्मजः रामः शबर्या पूजितः, मतलब शबरी जी के द्वारा दशरथ के पुत्र राम को राम की पूजा की गई। और कीदृशः वर्तते पूजा इति चेत् सम्यक् पूजितः। कीदृशः पूजितः इति चेत् सम्यक् पूजितः इति अर्थः भवति। सः महातेजाः शत्रुसूदनः शबरीम् अभ्यगच्छत्, दशरथात्मजः रामः शबर्या सम्यक् पूजितः इति सम्पूर्णस्य श्लोकस्य अन्वयः भवति। अर्थ देखिए, महातेजस्वी शत्रु के नाशक श्री राम शबरी के पास गए और शबरी के द्वारा श्री राम की भली भांति पूजा की गई, ऐसा हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर समस्त पद है महातेजाः। तर्हि महत् तेजः यस्य सः, महत् तेजः, तेजः इति तेजस् इति प्रातिपदिकं नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति कृत्वा महत् इति तस्य विशेषणं नपुंसकलिङ्गे एव। महत् तेजः यस्य सः, लेकिन ये पूरा पद जो बना है महातेजाः, ये पद राम का विशेषण है, इसलिए पुल्लिंग में तेजस शब्द को हमें चंद्रमस जैसे करके चंद्रमाः जैसे होता है वैसे ही यहाँ पर महातेजाः शब्द बनेगा। महत् तेजः यस्य सः बहुव्रीहि समासः महातेजाः इति वर्तते। शत्रुसूदनः,
शत्रूणां सूदनः शत्रुसूदनः इति अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः अस्ति, न तु उपपत् तत्पुरुषसमासः। दशरथात्मजः, आत्मजः इत्यस्य पुनः एकवारम् आत्मनः जायते इति आत्मजः इत्यत्र उपपत् तत्पुरुषसमासः अस्ति। दशरथस्य आत्मजः इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः वर्तते। Then we will go to the next shloka, which is पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेणः। अत्र पदविच्छेदं कृत्वा एव पठामि, तर्हि we will reduce one step. पंपातीरे हनुमता संगतः वानरेणः हनुमत् वचनाच्च एव सुग्रीवेण समागतः। सुग्रीवाय च तत्सर्वम् अशंसत् इति भवेत्, तत्र आर्षरूपमस्ति शंसत् इति। शंसत् रामः महाबलः आदितः तद् यथावृत्तं सीतायाः च विशेषतः सुग्रीवः च अपि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतः च एव अग्नि साक्षिकम् इति वर्तते। तर्हि अस्य अन्वयः प्रायः पूर्वस्मिन् पृष्ठे अस्ति इति मन्ये। अत्र वर्तते पंपातीरे हनुमता संगतो वानरेण, अत्र अस्ति खलु, तस्य अत्र अन्वयः वर्तते संगतः। कः संगतः? हनुमता वानरेण संगतः। संगतः मतलब मिले। कौन मिले? राम जी मिले। किसे मिले? हनुमान वानर को। कहाँ पर मिले? पंपा तीरे। पंपा तीरे वानरेण हनुमता संगतः। हनुमत वचनात् समागतः इति क्रियापदम्। केन समागतः? सुग्रीवेण समागतः। कस्मात् कारणात्? हनुमत वचनात् सुग्रीवेण समागतः। हनुमान के कहने के कारण सुग्रीव से मिले। अस्तु। तथा च अशंसत् इति क्रियापदमस्ति। तत्र श्लोके तु केवलं संशत् इति आगच्छति, परन्तु आर्षरूपमस्ति, अशंसत् इति भवेत्। अशंसत्, कः अशंसत्? रामः अशंसत्। किम् अशंसत्? सर्वम् अशंसत्। राम ने सभी वृत्तांत बताया। किसे बताया? सुग्रीव जी को। सुग्रीवाय अशंसत्। कीदृशः अशंसत्? आदितः, पहले से पूरा वृत्तांत बताया। अधुना कीदृशः रामः? महाबलः रामः। तर्हि अन्वयः कथं भवति? महाबलः रामः सुग्रीवाय आदितः तत्सर्वम् अशंसत्, सभी उसे बताया, सुग्रीव को बताया। किम अशंसत्? सीतायाः यथावृत्तं विशेषतः अशंसत्। विशेष करके सीता के बारे में संपूर्ण जो घटना हुई उसके बारे में विशेषतः बताया। मतलब उसका हरण कैसे हुआ, गृध्र का हनन कैसे हुआ, इस सब के बारे में बताया। ततश्च अग्रे अस्ति चकार इति, तत्र क्रियापदम् अस्ति। तर्हि कः चकार? सुग्रीवः चकार। कीदृशः सुग्रीवः? प्रीतः सुग्रीवः चकार। किं चकार? सख्यं चकार। कीदृशं सख्यम्? अग्निसाक्षिकं सख्यं सुग्रीवः चकार। केन सह चकार? रामेण सह चकार। तर्हि कथं भवति अन्वयः? सुग्रीवः कीदृशः? सुग्रीवः कः आसीत्? वानरः सुग्रीवः। तर्हि किमर्थं प्रीतः? रामस्य तत्सर्वं श्रुत्वा प्रीतः।
तर्हि राम का वह वृत्तांत सुनने के बाद प्रीतः, मतलब वो वृत्तांत तो कुछ आनंददायक नहीं था, फिर भी वो क्यों खुश हुए? क्योंकि अभी राम सुग्रीव की मदद कर सकते थे और उसके बदले में सुग्रीव राम की मदद करेंगे। यह बात सुग्रीव जी के मन में आई, इसलिए प्रीतः, और उसके लिए राम जी सुग्रीव के पास आए हैं, इसीलिए प्रीतः सुग्रीव रामेण अग्निसाक्षिकं सख्यं चकार इति अन्वयः अस्ति। तर्हि सम्पूर्णस्य अन्वयं कथं भवति? पम्पातीरे वानरेण हनुमता सङ्गतः हनुमद्वचनाच्च एव सुग्रीवेण समागतः महाबलः रामः सुग्रीवाय आदितः तत्सर्वम् अशंसत्। विशेषतः सीतायाः यथावृत्तम् अशंसत्। वानरः सुग्रीवः च रामस्य तत्सर्वं श्रुत्वा प्रीतः च रामेण अग्निसाक्षिकं सख्यं चकार इति तत्र अन्वयः भवति। सम्पूर्णस्य भाषान्तरं नाम हिंदी भाषायां तस्य अर्थं पश्यामः। पंपा सरोवर के तट पर राम वानर श्रेष्ठ हनुमान से मिले। हनुमान के कहने पर सुग्रीव से मिले। महाबलशाली श्री राम ने प्रारंभ से सभी वृत्तांत सुग्रीव को सुनाया तथा विशेष रूप से सीता के अपहरण की घटना को बताया। राम की पूरी पूर्व कथा को सुनकर हम दोनों समान दुख से पीड़ित हैं, अतः मैत्री करना हितकर होगा, ऐसा सोचकर प्रसन्न होते हुए सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी करके राम के साथ मैत्री की। एक क्षणम, आई विल जस्ट सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। नास्ति तत्र। Okay, I will go to the next shloka. ततः वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय आवेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति। तर्हि अस्य अन्वयं कथं भवति? पश्यामः। ततः मीन्स किसी घटना के बाद क्या हुआ है यहाँ पर? आवेदितम, बताया। आवेदितम मतलब बताया। किसने बताया? कह आवेदितम, केन आवेदितम? वानर राजेन आवेदितम। कस्मै आवेदितम? रामाय आवेदितम। किम आवेदितम? श्रूयते वा? ओके, अस्तु। तर्हि क्षम्यताम्। अस्तु, तर्हि वानरराजेन रामाय आवेदितं। किम् आवेदितं? सर्वम् आवेदितं। कस्मात् कारणात्? प्रणयात् आवेदितं। किम् आवेदितं? वैरानुकथनं प्रति आवेदितं। तर्हि वैर, उनका जो वैर है अपने भाई के साथ, वो उन्होंने बताया। और कीदृशेन वानरराजेन इति चेत् दुःखितेन वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय प्रणयात् तत्सर्वम् आवेदितम् इति अन्वयः भवति। अत्र पश्यतु, ततः दुःखितेन वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाय सर्वं प्रणयात् आवेदितं। तदा च रामेण वालिवधं प्रति प्रतिज्ञातम्। और उसके बाद
राम ने वाली वध की प्रतिज्ञा की। तो इस चरण का जो अन्वय है यहाँ है प्रतिज्ञातम, केन प्रतिज्ञातम, रामेण प्रतिज्ञातम, किम प्रतिज्ञातम, वालीवधम प्रति प्रतिज्ञातम, वालीवध का वालीवध की प्रतिज्ञा की, ऐसा यहाँ पर अन्वय आया है। We'll just see the aggregate meaning. 1 minute, please. राम ने सुग्रीव से वाली के साथ शत्रुता का कारण पूछा। राम के साथ अपनी प्रीति के कारण सुग्रीव ने वाली के साथ शत्रुता का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। वाली के इस अन्यायपूर्वक आचरण को सुनकर राम ने सुग्रीव के समक्ष वाली के वध की प्रतिज्ञा की। तो यहाँ तक हमने अभी देखा है, इसका हम अभी क्या व्हाट आई शुड से समास देखते हैं। जस्ट 1 मिनट प्लीज। वानर राजेन, ओके। चकार सख्यम रामेण प्रीतः च एव अग्निसाक्षिकम्। अत्र अग्निः क इति अस्ति खलु, क इति बहुव्रीहि समासस्य, तत्र वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ बहुव्रीहि समास। तो अग्निः साक्षी यस्य सः तम अग्निसाक्षिकम् इति भवति। तर्हि बहुव्रीहि समासः, अग्निः साक्षी यस्य सः तम अग्निसाक्षिकम्। वानर राजेन, वानराणां राजा तेन, षष्ठी तत्पुरुष समासः वानर राजेन। वैरानुकथनम, वैरस्य अनुकथनम, तत् वैरानुकथनम इति तत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। वैरानुकथनम। We have seen the whole shloka and samasa till 62 shloka. Give me a minute, please. No, we completed the samasas of 58 to 61, if I am not mistaken. If not, I will just check and we will complete it. But let me introduce you to our guest. Yes, Mahoday, you can unmute yourself, Shreyas. Or do I need to unmute you? Shreyas, are you there? Just a moment, just a moment. Okay. Astu. Tarhi, what you are saying, 58 to 61. Oh, did we miss? I don't know. Let us see. So I will complete this part, Shreyas, till you are ready. Yes, ma'am. Okay. Okay. So yes, you are right. We have missed this part. We will complete it. Pampatire. पंपायाः तीरं पंपातीरं तस्मिन् इति अत्र अपि षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। पंपायाः तीरं, पंपा नदी के तट पर। हनुमत वचनात्, षष्ठी तत्पुरुष अगेन। हनुमतः वचनात्, हनुमतः वचनं, हनुमत वचनः, वचनं तस्मात्। क्षम्यतां, पुनः एकवारं वदामि। हनुमत इत्यस्य षष्ठी अस्ति हनुमतः। हनुमतः वचनं, हनुमत वचनं तस्मात्। तस्मात् इति किमर्थं? हनुमत वचनात् इत्यत्र पंचमी अस्ति इति कृत्वा हनुमत वचनात्। महाबलः इत्यत्र अपि समासः अस्ति। महत् बलं यस्य सः। पुनः एकवारं पश्यतु। महत् बलं यस्य सः, अत्र बहुव्रीहि समासः। महाबलः, बलम् इति मूलतः नपुंसकलिङ्गे वर्तते, परन्तु महाबलः इति रामस्य विशेषणमस्ति इति कृत्वा पुल्लिङ्गे भवति, अतः महाबलः इति रूपं भवति। Are you ready, Shreyas? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay, I'll mute myself. So this is Shreyas from Vema. He wants to have a talk with you, all of you. Sarvebhyah Ram Ram Ram. I'll just take a few minutes. I'll just share my screen. Just a moment. I hope my screen is visible. Yes, visible. So, firstly, I would like to share the feedback form for the course. It will help us enhance the course content delivery and support. And as you know, your feedback is extremely valuable to us. So I'll be just stopping the share for a moment, and I'll share the feedback form. I have posted the feedback link on the webinar chat. So I request all of you to please take few minutes of your time to fill the form. By then, I'll just make a humble submission about Vyoma and what we do. And I'll again share my screen. And also, please remember that the feedback form submission is essential to complete your certification process. So you have to fill the form in order for you to get the final course certificate. So our humble seva. So I'll just take a few minutes to explain what we do at Vyoma. So as you all know, Vyoma is a non-profit seva organization, and we are involved in the prachara of Samskrita, Sanskriti, and Samskara. So we do that through a variety of means. So as you can see, we have 3 websites. The first one is sanskritfromhome.org. So there we have 400 plus courses which are all available for free. And the other website is vyoma.org. There you can find information about how Vyoma was founded and who are the important people behind the idea of Vyoma. And the third is digitalsanskritguru.com. There you can find, that is our e-commerce website, where you can purchase our multimedia devices and also our publications. So these are few seva metrics. So we have 49 self-learning multimedia products, 400 plus free courses available on our website Sanskrit from Home, 10,000 plus video and audio content, and 95,300 plus committed learners who are enrolled on our platform. And all this has been possible, of course, by Bhagavan's Kripa and also by all of your generous support. So how can you be a part of the Samskrita Sanskriti Samskara Seva? So these are a few simple steps that all of us can take. So the first would be prayers. So all of you can pray for Vyoma and pray that a lot of people join our courses. And the second step would be obviously to enroll to the courses and learn. It could be anything of your interest. There are a lot of variety of courses available on our platform. So do take up what you feel you can and start learning. The third is to spread the word. So you would have benefited from our courses in many ways. So you can also spread the word to your close ones, your family members, your relatives and friends. The next step would be to volunteer. So again, volunteering can be, it can be any amount of time that you feel you can provide to us. There are a lot of tasks that require your help, like there are video editing, simple video editing, creative tasks like creating banners, and even there is help required in the technology side, like there are a lot of products, audio products, audio testing, and even in publications. So it could be anything, just a small seva that you can do as a volunteer. You can also teach. Again, teaching doesn't have to be very intensive and rigorous teaching. It can be simple things like teaching stories and bhajans for kids, whatever you can. So you can also teach. And obviously, the final step is you can donate to us. So as I said, we are a non-profit seva organization. So whatever that little that you can contribute to us would go a long way in for us to keep up our seva of Samskrita Sanskriti Samskara.
So I would just show how to apply for being a volunteer. Ekakshanam, Shreyas, someone is saying that this link is not openable, but only one person says that. I don't know. Was it openable for others? Please see it. Yeah, if it is not openable, I request you to please share in the chat box. And yeah, I'll just stop the share for a moment. Yes, ma'am, it is opening. So I think it is working fine. Yes, it is open. Yes, ma'am. Just a moment, I'll just continue my presentation. So to apply for being a volunteer, you come to our website sanskritfromhome.org, and here on the top right corner, you can have the option of volunteer or donate. So if you click on volunteer, you can find the volunteer form where you fill in your basic details, and then you can also, I think, give your preference for what kind of task that you can do. And for if you would like to donate to Vyoma, here you can click on the donate button, which will take you to a new page. And here we have 9 donation schemes. So whichever cause that you feel you would like to contribute. For example, we have Guru Dakshina. So that will go down as contribution to the teachers. There is also Vidya Danam, which is contribution for the courses, and Grantha Danam, which goes for all the processes in publication. And there are also several other schemes like for Sabhas, for Annadanam, and also for several events that we conduct from Vyoma. For people who are not from India, is there some different website, Shreyas? No, ma'am. Actually, it will be the same link that will go. And I think once you go to the page, I think there'll be different options for payment. Okay. But the link is the same. Okay. So there is also the option of rating our courses. So I would like to show that as well. So once again, I would take you to the website. So once you once you sign in, you go to My Learning. And here you can enter the course, and then you can there'll be the option of so once you come here, you can rate the course. I hope my screen is visible. Yes, your screen is visible. Can you share the link of that, or it is available on their course page only? It will be available on their dashboard. Once they log in, it will be available. Okay. And one more thing, someone is saying, can we post the feedback that form in the WhatsApp group? That link, can we post it? Yes, sure. That will be done. It will be done soon. So everyone has to fill the form in order to get the certification. So that was it from my end, Leena Bhagit. Okay, astu. Dhanyavad. So I will restart my course, the teaching Yes, again, so that I can yes, finish up 1 or 2 shlokas more. Thank you, Shreyas. Thank you very much for giving the valuable information about Vyoma, because that helps people a lot. Thank you. Thank you. I will reshare the screen once again. Okay.
तर्हि अस्माभिः okay. So we have completed till 62. Now let's complete 63. One more we can finish up. वालिनः च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितः च आसीत् नित्यं वीर्येण राघवे. So here the Sugriva is telling Vali about the about Vali to Rama. Okay. So अत्र कथयामास इति क्रियापदम् अस्ति. कः कथयामास, कः शङ्कितः आसीत् इति अत्र लिखितम् अस्ति. शङ्कितः आसीत्. कः शङ्कितः आसीत्? सुग्रीवः शङ्कितः आसीत्. नित्यं शङ्कितः आसीत्. कस्मिन् शङ्कितः आसीत्? राघवे शङ्कितः आसीत्. केन शङ्कितः आसीत् इति चेत् तत्र वीर्येण शङ्कितः आसीत्. कस्य वीर्येण? रामस्य वीर्येण शङ्कितः आसीत्. सुग्रीवः कः अस्ति? वानरः. तर्हि सुग्रीव वानर को राघव के वीर्य मतलब सामर्थ्य के बारे में नित्य शंका हो रही थी. इसलिए उन्होंने क्या किया है? कथयामास. किम कथयामास? कः कथयामास? सः सुग्रीवः बलम. कस्य बलम? वालिनः बलम कथयामास. वाली के बल के बारे में उस सुग्रीव ने राम को कहा. क्यों कहा? क्योंकि उन्हें उनके मन में शंका थी. वानरः सुग्रीवः राघवे वीर्येण नित्यं शंकितः च आसीत्. अतः सः सुग्रीवः तत्र वालिनः बलं च कथयामास. वाली के बल का वर्णन किया. अर्थ देखते हैं, फिर समास देखेंगे. सुग्रीव वाली के बल से सुपरिचित था. वाली में इतना बल था जिसके समक्ष संसार के बड़े बड़े बलवान भी धराशायी हो जाए. जब राम सुग्रीव से मिले तो सुग्रीव बहुत संतुष्ट हुए, परंतु निरंतर उनके मन में राम के बल को लेकर शंका रहने लगी. उन्हें शंका थी कि राम की शक्ति वाली के समक्ष टिक नहीं पाएगी. अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा से युक्त सुग्रीव ने राम के बल को जानने हेतु उसके समक्ष वाली के शक्ति का वर्णन किया. विस्तृत अर्थ दिया है उन्होंने कि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए. यहाँ पे समास का अर्थ देखते हैं. यहाँ पे कुछ समास है. वानरः सुग्रीवः राघवे वीर्येण नित्य शंकितः आसीत्. तत्र वालिनः बलं च कथयामास. There is no samasa in this shloka. So we can take one more shloka quickly. राघव प्रत्ययार्थं तु बुदुन्दुभेः कायम् उत्तमं दर्शयामास सुग्रीवः महापर्वत सन्निभम्. तो उन्होंने वाली का जो सामर्थ्य था उसे दिखाने के लिए दुंदुभी नामक राक्षस का शरीर दिखाया. अभी देखिए यहाँ पर हम उसका अन्वय करते हैं. दर्शयामास. कः दर्शयामास? सुग्रीवः दर्शयामास. किं दर्शयामास? कायं दर्शयामास. कस्य कायं दर्शयामास? दुन्दुभेः कायं दर्शयामास. उत्तमं कायं दर्शयामास. तथा च पर्वत सन्निभम. मानो महापर्वत सदृश हो ऐसे शरीर को. किसके शरीर को? दुंदुभी के शरीर को राघव के प्रत्यय के लिए सुग्रीव ने दिखाया. राघव प्रत्ययार्थम. राघव को प्रत्यय आए, समझ में आए, इसलिए दिखाया. क्या दिखाया? दुंदुभी का शरीर दिखाया. अन्वय देखिए. सुग्रीवः
राघव प्रत्ययार्थम तु महापर्वतसन्निभं दुन्दुभेः उत्तमं कायं दर्शयामास। वाली महाबली था। सुग्रीव प्रतिदिन राम के बल की प्रति शंकित रहता था। उसने दुंदुभी नामक राक्षस का शरीर राम को दिखाया, जिससे राम को वाली के महाबली होने का विश्वास हो जाए। दुंदुभी का शरीर किसी महापर्वत के समान विशालकाय था। ऐसे बलवान राक्षस को भी वाली ने मारकर दूर फेंक दिया था, और इसलिए उन्होंने दिखाया है। Now we will go to the समास। राघव प्रत्ययार्थम, राघवस्य प्रत्ययः राघव प्रत्ययः, राघव प्रत्ययाय नाम राघव प्रत्ययार्थम। यहाँ पर राघव प्रत्ययार्थम का विग्रह हो सकता है राघवस्य प्रत्यया, राघव प्रत्ययाय इदम, ऐसे भी विग्रह हम कर सकते हैं। यहाँ पर तस्मै इस पद से विग्रह दिखाया गया, तस्मै राघव प्रत्ययाय। महापर्वत सन्निभम, महांच असौ पर्वतः इत्यत्र कर्मधारय समासः अस्ति। महापर्वतेन सन्निभः, महापर्वत सन्निभः तं द्वितीया अस्ति इति कृत्वा तं, तर्हि अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। महापर्वतेन सन्निभः इत्यत्र बहुव्रीहि समासः। महांच असौ पर्वतः इत्यत्र तु कर्मधारय समासः अस्ति। So we have completed till 64 number shloka. Now you can ask me questions, but let me check if I also have a question. Shloka 59. Can we? Okay. Yes. Yes, Chittur Venkatraman ji पूछिए। Namaste, madam. Please come नमस्ते। to Sloka 56, 57, Anbaya. एक अक्षरम। तम निहत्य महाबाहु, तम निहत्य। वदतु महोदय। Please come down. Please, here, Kathaya Masa, and the center it is Saha, both Karta and Karma. Can you please explain this? Karma is asya. So asya is karma. Oh, it is shifted. Okay, okay. Thank you. I'm So sorry. it is little bit up. Yeah, right, right. Thank you. बट कर्म की द्वितीया होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चतुर्थी। दैट इज विवक्षा, ओनली विवक्षा। Thank you, madam. See, I completed the revision very quickly because we have only 2 days to revise. We don't have much time, so I was a bit quick. Whomsoever have doubts or anything, please go to the recordings. You will understand that. Okay, Murli ji, बोलिए। तो वहाँ पर वो अच्छा एक एग्जाम्पल था जो कर्मणि प्रयोग का, पूजिता है, खबर्या पूजिता है, खबर्या सम्यक पूजिता है। ये सेंटेंस कर्मणि प्रयोग का एक अच्छा उदाहरण दिखा। जी। और अब एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जो उपपद तत्पुरुष समास होता है उसमें जनरली ये मैं देखता हूँ कि जो उत्तर पद है उसमें क्रिया हो,
क्रिया रूप क्रियापद होता है, हम्म, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। जैसे कि सर्वज्ञ, अभी ज्ञ हाँ जो है जानाति का ज्ञ आया है वहां पर, तो सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। गृहस्थः, गृहे तिष्ठति इति गृहस्थः। हाँ, देशस्थः, देशे तिष्ठति इति देशस्थः। तो मतलब वो हस्तस्थः, मतलब उत्तर पद में क्रियापद आता है। हाँ क्रियापद का we can, for our understanding we can say it's a short form of a क्रियापद। हाँ, और लाइक आई आई मे बी लुकिंग आर्ग्यूमेंटेटिव, जो मृष धातु का जो मैं पूछ रहा हम्म था, हम्म उसमें दोनों मैं फाइनली आई मतलब मैंने देखा दोनों मीनिंग वाइज तो दोनों अप्लाई होते हैं, और लेकिन जो मर्शय मर्शयत आ रहा है हम्म वो हम्म निजंत के सिवा दोनों में नहीं आ रहा। हम्म। लेकिन हमने लेकिन शायद जब हम्म, हमने लिखा है वहां पर मर्शयत जो उसमें प्रेजेंटेशन फाइल में जो लिखा है उसमें मृषम तितिक्षायाम प्लस छत्र कृत लिखा है। मेरे ख्याल से निजंत के बिना वो यह जो देखिए है जहां पर, नहीं आएगा। एक मिनट लेट मी एक्सप्लेन, जहां पर स्वार्थे नीच होता है वहां पर अलग से नीच लिखने की जरूरत ही नहीं होती। जहां ये जहां आजाद पर हम प्रेरणार्थे लिखते हैं वहां हमें नीच लिखना ही चाहिए। अगर चुरादी गण का है तो अलग से नीच लिखने की जरूरत ही नहीं है वहां। हाँ, वो तो मतलब उसके क्या बोलते हैं विकरण प्रत्यय में लगेगा ही लगेगा, विकरण नहीं इसमें लगेगा ही लगेगा पूरा करके। पर ये शायद दोनों अदादी है, हम्म, कौन से मृष? ये एक मृष में दिवादी दोनों। है, एक वादी है, एक चुरादी है। तो ओ, ओके, ओके मैम। यस सुशीला जी। नमस्ते भगिनी। So about this नमस्ते। श्लोक 59, उसमें हम्म, आर्ष रूपम आपने बताया शमसत। तो अशंसत। हाँ, तो इसका मतलब धातु वो व्युत्पत्ति कैसे बताएंगे आप? अगर जैसे देखिए यहाँ पर बोलने में देखेंगे तो बताती हूँ। बोलिए देखिए कैसे? यहाँ पर शंसत, हाँ जी। त त है अंतिम। हाँ हाँ अगर लंग लकार का अगर हम देखते हैं तो त हाँ यह प्रत्यय है यहाँ पर। लेकिन लंग लकार की विशेषता क्या है, वहां पर अ का आगम होता है। यहाँ हाँ पर अ आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। या तो संसद, सिर्फ संसद अर्थ के हिसाब से उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ वहां पर अशंसत है और हाँ। अशंसत नहीं लिखा है तो आर्ष रूप है, इसलिए हम तो इसका धातु कैसे बोलेंगे मतलब? शंस धातु है। चम्स धातु। हाँ, ओके ओके। नो इसका मैम, सॉरी, आई हैव नॉट मेड अ इसका नोट। रूप परिचय। ओके, हाँ ओके। अगर रूप परिचय करना है तो अशंसत ऐसा ही गृहित होकर, हाँ, मतलब मन में गृहित करके करना अच्छा अच्छा, ओके। थैंक यू मैम। पड़ेगा। ओके, any other question? You can mute as soon as you finish up the question. Anyone else have any question? I think there is no question. Please start studying. So we have this link of the Vyakarana sheet which is prepared by volunteers of your class only. So please do visit this, study well. Though the exam is from 100 to, I mean, first shloka to 100 shloka, you have to study from 1 to 100 shloka properly, but the question paper can be more on 50 to 100. I can upfront tell it to you, but you have to study the whole syllabus. Hope this is clear about all exam and everything. Exam dates are also known to you. There is no question in question answers.
So let us say the prarthana and finish up the class. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramayah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Before ending the session, I will share the link of the feedback form. Please fill up the feedback form and also please give the ratings to the course, whatever it is. Dhanyawadaha.